Hello guys, hope all are doing great. Today is Friday and today is the day to tell again one more, I will not say story but life lessons. Life lessons are very important to know because from that you get many things to learn and many things to relearn, unlearn, rewind, understand, introspect. बहुत कुछ ऐसा है कि जो अपने को किसी का स्टोरी सुन के या किसी का बात सुन के या किसी से बात करके मालूम पड़ जाता है. And then we get that experience and then we get that, what do you say, the inspiration to do something better in life. Sometimes it happens that हर चीज आपको एक्सपीरियंस करना जरूरी नहीं है. कभी कभी ऐसा भी होना चाहिए कि कोई ने कुछ किया एंड बिकॉज ऑफ दैट यू नो दैट ये करने से अच्छा होता है, रिजल्ट अच्छा है, यू ऑल्सो गो एंड डू दैट. फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको मालूम पड़ा है कि ये कोचिंग में बहुत अच्छा क्लास लेता है कोई सर and in that class many students have gone through because students have also worked hard and the coaching is also very good, so people go for it. Sometimes it happens that you come to know that through this path if you go, वहां पर ये हर्डल होगा, ये हर्डल नहीं होगा and all that, and you get that experience in life. तो आज का स्टोरी बहुत सिंपल है. आज का स्टोरी ये है कि डूइंग द हार्ड थिंग इज द बेस्ट फॉर यू एंड योर कंपनी. सपोज इफ यू आर वर्किंग फॉर सम कंपनी. आज का लेसन थोड़ा उन लोगों के लिए है कि जो अपने किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और किसी कंपनी में एक पोजीशन पर हैं एंड दे आर थिंकिंग दैट पोजीशन इज स्टैग्नेंट. दे आर थिंकिंग दैट दे आर नॉट ग्रोइंग इन द पोजीशन. देयर हैज टू बी सम रीजन अदर if they are not growing. If they are growing, that means they are fully dedicated, they are responsible, they are working hard and they are giving their best in the company. एक 10-12 साल पहले हमारे कंपनी में एक लड़का ज्वाइन किया था और वो लड़का फ्रेशर ज्वाइन किया था. आई मीन ही वाज अ फ्रेशर एंड आई रिमेम्बर 15 years old. दिस स्टोरी इज 15 years old एंड I love to tell this story because I have understood that why people grow up so fast and why people touch that success level. So this person was working at the helper level, at the very low level as a fresher, and when he joined in the company, slowly ऐसा हुआ कि क्लरिकल वर्क करते करते वो और थोड़ा डेस्क जॉब पे आ गया. डेस्क जॉब से करते करते वो थोड़ा कंप्यूटर सीखने लग गया. ही शोड इंटरेस्ट इन द कंप्यूटर. तो काफी लोगों ने फिर उसको प्रमोट किया कि ओके ही इज वेरी हार्ड वर्किंग एंड ही इज अ गुड लर्नर एंड ही इज शोइंग इंटरेस्ट, सो व्हाई नॉट. तो नॉर्मली हर कंपनी में ऐसा एक पोजीशन होता है कि पीपल ट्राई टू प्रमोट दोज गाइज हु आर शोइंग वेरी कीन इंटरेस्ट एंड ऑल्सो by helping such guys we are creating more asset to the company. So now this guy started doing some additional computer course from outside also. This guy started doing some law course from outside. I mean he got so much of interest in reading, interest in learning, interest in doing something more that he did not stop there. And within a span of 10-15 years this guy was among the 5-6 top members of the company. I mean he has now become the हर कंपनी में एक ग्रुप होता है जो कि कंपनी के टॉप लेवल पे काम करता है एंड नॉर्मली वो ग्रुप एक 5-6-7 आदमी 10 आदमी का होता है. तो ये बंदा जो 15 साल पहले ज्वाइन किया था ये उस लेवल तक पहुंच गया कि नाउ ही इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ द कंपनी. नाउ व्हेन वी एनालाइज, व्हेन वी सी हिज स्टोरी, व्हेन वी सी हिज journey from that level, junior level to this level, what we can analyze from that is why he has reached here is because of 2-3 factors. One is his proactiveness, one is he's eager to learn something, one is his never give up attitude, and moreover कंपनी में जब भी कोई ऐसा काम होता था कि जो काफी लोग अवॉइड करते थे, जो काफी लोग सोचते थे कि कम ऑन दिस वर्क इज अ हेडेक, वी डोंट वांट टू टेक दिस प्रोजेक्ट और वी डोंट वांट टू टेक दिस टास्क बिकॉज this will get delayed as though, so we don't want to spoil our name and all that.
those tasks this guy used to take with a smiling face. तो जहां पर भी कोई ऐसा इशू आता था, प्रॉब्लम आता था, वो उसको फट से एक्सेप्ट कर लेता था एंड ही यूज टू हैंडल इट वेल ऑल्सो. अभी छोटे मोटे इश्यूज तो आते ही हैं, बट अल्टीमेटली ही यूज टू हैंडल इट वेल एंड एट द एंड ऑफ द डे he used to complete that task. That was his good part. तो ऐसा करते करते उसने अपना एक इमेज कंपनी में बना लिया कि ही इज द ट्रबल शूटर नाउ. एंड कंपनी में कुछ भी ऐसा कोई इशू, प्रॉब्लम वाला कोई प्रोजेक्ट आ गया, प्रॉब्लम वाला कोई टास्क आ गया, कोई मसला ऐसा अटक गया जो कि ट्रबल शूटिंग वाला मसला है, द मैनेजमेंट ऑल्सो started asking him to take up this job, started asking him to take up this project, because they knew that if he will take it, and they were sure that he will take it, he will do his best and he will complete the task and he will come out with shining colors. So that was his image, what he had developed from that junior level person till after 10-15 years to this position. And he was in that in that group of people, 5, 6, 10 people, where he was in demand, in question, and always people used to seek his help if something has to be done which was not moving ahead, which was not happening, or which was not closing fast. So there are people that gives such impression on their career that management also likes to use such people for their better work, and management also likes to promote such people because they ultimately become an asset to the company. They ultimately become a good employee of the company, trustworthy person of the company, loyal person of the company, and such people are always retained in the company for a longer duration because they are so helpful, so deeply involved in the day-to-day matters, and they take their ownership of the work without thinking twice that this will happen or that will not happen. So the point here is, the message what I'm trying to make clear here is, doing the hard thing is the best for you and your company, because normal thing तो सब लोग कर लेते हैं, normal काम तो सभी लोग कर लेते हैं, I mean that is not an issue. But the problem is that when companies get stuck with difficult tasks, you should be the first to grab it, you should be the first to attend to it, and you should see that you come out of that project with flying colors. So अगर कंपनी में अपना इंपॉर्टेंस बढ़ाना है, अगर कंपनी में अपना इमेज बढ़ाना है, वैल्यू बढ़ाना है, तो ऑलवेज ट्राई टू डू द हार्ड थिंग्स, ऑलवेज ट्राई टू सी दैट the more tough work you are doing, so that you are close to the management, you are highlighted, and you also grow in the company with your skills, with your experience, and with your attitude of your confidence. I hope I must have given some message out of this. Thanks a lot for listening. See you soon in my next video.